Hello, everybody. Hi. Can somebody confirm if I'm audible or not? Hi. Can you please confirm if I'm audible or not? All right. Thank you. So let's just wait for another 5 minutes so that everybody could come in here. Is there any disturbance in the background? All right. So we'll start off the session today. Hello, everybody. I'm Anshu Mathur, and I'm currently doing my master's from New York University. And I'm a first year graduate student here, and my major is in computer engineering. So I'm here today to give you a basic outline of all the steps and the resources that you'll need for your master's application, because a lot of people basically face many problems in how to apply and what about the challenges that you face here. And life's not that easy, right? And one more thing, I would like to ask the audience, do you want me to speak in English or Hindi? Like, I'm good with both. Can somebody confirm, like, whichever language is suitable for you? All right, so there are mixed reviews. So I'll go both English and Hindi at the same time. So yeah. All right, I'm so sorry. I do not know Marathi. I'll be good with English and Hindi both.
All right. So we'll start with both now. So, as I told about myself, I'm doing masters in computer engineering from NYU or New York University. So basically, बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे आपके दिमाग में when you think about masters, especially what is the difference between MS and MTech, or कैसे to like go about it, and why US over India and all these things. So to start off, like I hope that many of you are basically aiming for your masters since you're attending this session. So, yeah. All right. So I'll explain in short basically what is the basic difference between MTech and MS. So, yeah, MTech basically India में ज़्यादा होता है because it's more of theory based and MS is more of research and practical work based. So that's the basic difference. And MTech is generally called as MS in the US and many other countries. So, yeah. So the basics, like the first step that you should know is which field of interest do you want to pursue your master's in? That's the most important step. Like I did my undergrad in computer science and engineering, and I'm doing my master's in computer engineering, or maybe specialization is in machine learning basically. So that depends on which field of interest are you into or you're actually looking up to. So yeah, यहाँ पर because my major field of interest is machine learning, so it makes more sense. Like it actually made more sense for me to pursue a masters, like because in BTech you're not able to grab like एकदम right amount of information for any field. That's the main like point to pursue a masters or an MS. And yeah, the first question that pops up in your head might be like, why the US? Like, why not India for masters? So yeah, first of all, India कुछ 10 decades पीछे है US से, especially in the field of computer science, or specifically talking about machine learning, or you can say artificial intelligence and all that stuff. So basically, yeah. So that's the main point that encouraged me to pursue my master's from US. Yeah, and also one of the most important thing that you might be thinking, professors यहाँ भी अच्छे हैं इंडिया में, professors US में भी बहुत अच्छे हैं. तो what is the main difference? Like why to go about spending too much on the US education? Yeah, so the main thing is US में आपको actually opportunity मिलती है जो एकदम ही like the top notch professors in any field. Let's call it the people who actually built machine learning systems for the first time, or the people who wrote specific books on machine learning and they invented certain technologies. They're actually teaching you here in one like in many best universities, you can say like that. तो आप actually interact करते हो उन लोगों से. And India में because since it actually lacks in all of these fields by some 10 decades or more, to be more specific. So you do not get that opportunity. Okay, so there's a question here, Kuresh. Okay, how does it cost to study abroad? Yeah, so that's basically not a very general question. मतलब आप ऐसे नहीं बता सकते कि exactly कितनी amount लगेगी. But there's an estimate you can say. So the first thing I wanted to bring it later, but since you asked this question, it goes like दो तरीके की यूनिवर्सिटीज होती हैं यूएस में. First is the state universities, and the next is the private universities. So state universities or the public universities are generally cheaper than the private universities. So per year it should be around 35 to 45K for your public universities and almost double the price for your private universities. So that's the difference here. And isme, this is just your tuition fee. It varies from university to university again. And also it depends on which type of university you're actually aiming for. And also it does not include your cost of like living here and all that stuff. Yeah, so somebody asked option. Okay, talking about the fees. Yeah, I was actually talking about that. It's not a very specific question. Okay, Yash, here's the question that he asked. What is the procedure of applying for university? And what is the right time to start the application procedure? And what are the prerequisites? All right, that's a really good question.
So, what is the procedure? I was about to start with that. So, there are two exams basically, the GRE and TOEFL. So, both of them are mandatory for you to for your master's application. Like 99% of the universities would want your GRE and your TOEFL score, and TOEFL can be replaced with your IELTS score as well. Yeah. So, as you all might be knowing a little bit about GRE, I hope. So, GRE is basically your English plus math exam, which is required to test your knowledge in English and mathematics. तो उसमें वो बस ये देखते हैं बेसिकली कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर होगे उनके यूनिवर्सिटी में, तो यू शुड बी एबल टू क्रिटिकली लाइक एनालाइज उनका जितना भी टेक्स्ट होगा या उनके जो आइडियाज होंगे, और आपको आगे जाके अगर प्रेजेंट करने पड़े अपनी यूनिवर्सिटी में, सो यू शुड बी लाइक यू शुड बी अ गुड फिट फॉर दैट. सो दैट इज द मेन पर्पज ऑफ टेकिंग द जीआरई. और जीआरई स्कोर्स डेफिनेटली बताएंगे कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का एक कट ऑफ होता है, एंड उसके बिना दे डू नॉट इवन लुक एट योर एप्लीकेशन, लाइक हाउ एवर स्ट्रॉन्ग योर एप्लीकेशन इज, बट दे वांट अ स्पेसिफिक जीआरई स्कोर. या. And also, what is the right time to start the application procedure? Okay, so the right time I would, yeah, according to me, like speaking from my personal experience, it's very important for you to send your GRE and your TOEFL scores before, like 3 to 4 weeks before the application deadline. So now there are two sessions, like the fall session and the spring session. So basically, for the fall session, so fall starts in August and spring starts in January as a new admit. Yeah, so the deadlines vary for both of them. Like I do not remember exactly the timeline, but yeah, it should be for spring. The deadline should be around March, April, and for fall, it should be around November, December. Yeah, that's the thing. So, ideally, like if you want your application to be considered by the universities, you should send your scores via ETS 3 to 4 weeks before the application deadline. सो नाउ अब आपको ये एक तो चीज़ देखनी पड़ेगी कि आप फॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी जो अगस्त में सेशन शुरू हो रहा है, या आप स्प्रिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो जनवरी में शुरू हो रहा है. तो अगर आप फॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेडलाइन जनरली नवंबर दिसंबर के अराउंड होती है. उससे 3-4 हफ्ते पहले आपको अपना स्कोर भेजना है यूनिवर्सिटी को. तो उससे पहले आपको 1 मंथ taking, like if you prepare with full honesty, then you should take a month or so to qualify the GRE, and TOEFL साथ साथ होता रहेगा because GRE is like way difficult than TOEFL. Yeah. So, and also, what are the prerequisites? There are a lot of prerequisites. Firstly, I talked about your exams, considering the deadlines. Then you have to like there are certain things like the LORs, letters of recommendation, जिसके अंदर भी जिन भी प्रोफेसर या किसी भी अथॉरिटी के अंदर आपने काम किया है, स्पेशली लाइक ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप और आपके कॉलेज में, उनसे आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा कि आपने किस चीज़ में काम किया है, हाउ गुड यू आर. सो बेसिकली आपके प्रोफेसर्स ही आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगा वो यूनिवर्सिटी को मेल के थ्रू भेजेंगे, या फिर यूनिवर्सिटी अपना एक पोर्टल आईडी देती है जिसके थ्रू आपके प्रोफेसर्स अपलोड करेंगे. या सो LOR इज दैट इम्पॉर्टेंट. इट्स अ रियली इम्पॉर्टेंट थिंग दो. देन कम्स योर ट्रांसक्रिप्ट्स. या सो आपके स्कोर्स, लाइक आपका जीपीए बहुत मैटर करता है. जो भी आपका अंडरग्रेड में जीपीए होगा, योर ट्रांसक्रिप्ट्स और योर मार्कशीट्स, वो आपको अपलोड करनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज की एप्लीकेशन फॉर्म में. देन देयर इज योर रेज्यूमे. हर एक यूनिवर्सिटी नहीं पूछते आपके रेज्यूमे के लिए, बट इट शुड बी गुड इनफ. लाइक इट शुड बेसिकली बी सूटेबल इनफ अकॉर्डिंग टू द US स्टैंडर्ड्स. सो आपको वो देखना पड़ेगा कि आपको रेज्यूमे में क्या क्या लिखना है, कंसिडरिंग एवरीथिंग लाइक द बॉडी ऑफ द रेज्यूमे, the language that you're using, the bold, italics, everything you'll have to consider. Yeah, so resume is also an important factor. Then comes your exam scores, as I earlier told. Then is your statement of purpose. So basically, अब आप इसको ऐसे देखिए, it's not a joke that people say that SOP or statement of purpose is really important. Speaking from my personal experience also, SOP बहुत ज़्यादा important चीज़ है, क्योंकि आप एक स्ट्रेंजर हो यूनिवर्सिटी के लिए, एंड आपको बताना है कि वाई आर यू अ फिट टू बी देयर ग्रेजुएट स्टूडेंट.
उनके पास 10,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं एंड दे हैव टू चूज लाइक इन हंड्रेड्स और इवन लेस देन दैट. सो व्हाई शुड दे गो अबाउट चूजिंग यू? So that's the main thing. आपको SOP में बहुत ही explicitly अपने experiences, how are you a good fit and everything. You'll have to include it like very precisely. So yeah, these are the important prerequisites. Yeah, Rameshwar asked this another question. Is there good exposure at renewable energy sector abroad? I'm so sorry, but since my field is computer science, so I'm not much experienced with this. But yeah, uh, considering some of the courses here at NYU, there are some like you can talk about researches going on in the energy sector. So yeah, they're pretty good here. Okay, Rohan asked this question. After H-1B visa messed by Trump, isn't it harder now for US? No, so basically there's some misconceptions going on everywhere. So what Trump's statement has affected is basically the people who directly come for jobs here. तो H1B को भी नहीं इससे कुछ फर्क पड़ेगा. एंड सिंस यू विल बी कमिंग एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स तो आप F1 वीजा पे होंगे लाइक स्टूडेंट वीजा. तो उस पे देयर बी नो इफेक्ट बिकॉज यूएस की इकोनॉमी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स दैट आर कमिंग हियर टू स्टडी फ्रॉम अब्रॉड, राइट? So it won't have any effect as of now. All right. So there's another question. What is the fees for studying abroad? As I told initially also, so there's no fixed fee as such, but you should take it like considering private university or public universities. Private universities ज़्यादा महंगी होते हैं definitely. Almost double the price as the public university. तो public university का per year should be 35 to 45K, and this does not include your living expenses. This is just your tuition fee. Yeah. The next question is if your academy, Shivam asked this question, if your academic score is poor, then does it matter to get admission in good university? Yeah, so basically, GRE is not just about your academic score. It's it's a balance of everything. तो अगर आपका academic score यानी आपका GPA कम भी है थोड़ा सा, तो आपको इनिशियली एक फ्रेम होना चाहिए आपके माइंड में कि ओके, my academic score is low, I'll have to perform really good, like exceptionally good on my GRE. Because TOEFL isn't that important. It's just a कट ऑफ कि आपको इंग्लिश आती है, आपको बोलनी आती है, आपको सुननी आती है, आपको समझ आती है. TOEFL इज़ लाइक दैट. सो जीआरई में आपको फोकस करना पड़ेगा अगर आपका एकेडमिक स्कोर कम है. बाकी चीज़ें आपकी इंटर्नशिप्स पे फोकस करना पड़ेगा. अपना प्रोफाइल बिल्ड करना पड़ेगा, रेज़्यूमे बिल्ड करना पड़ेगा. So that I'm so sorry. So that you get like better letter of recommendation and all that. So yeah, it does matter, but you can definitely cover up for it. All right. So Amit asked this question: how does you go for AI or ML? Which part of computer language you focus on? All right, that's a really good question. All right. So basically, I got to know that I'll be going for ML or specifically AI during my internships only. So it was during my second year of BTech here in India. I worked on a Delhi police project, which was basically to build a machine learning system. So I started off like I kicked off learning by implementing that project or by implementing the machine learning programs or the algorithms there. Primarily, my focus is on Python. Yeah. Uh, Naveen asked this question: which university is better in US? So there's no concept of better. So there are like top-notch universities, then there are safe universities. So what the concept is, you can generally go Google the topmost universities on QS universities, and there are like many other websites also जहाँ पे आपको रैंकिंग बता दी जाएगी यूनिवर्सिटीज की. तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेटर है. बट ये भी डिपेंड करता है कि आप किस में फिट है. यानी आपका स्कोर किस यूनिवर्सिटी के कट ऑफ को क्लियर कर रहा है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, इनटेक कैसा है यूनिवर्सिटी का, एक्सेप्टेंस रेट कितना है. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स और हर एक फील्ड में यूनिवर्सिटी डिफरेंट है. इट्स नॉट जस्ट कि हर एक यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल X university isn't good in all the fields like computer science, civil engineering. It's not like that. हर एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन द फील्ड ऑफ योर इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स. All right, Naveen, which university I have to choose in US? All right, so this again depends on which field of interest you actually are aiming for, and
Yeah, depending on that and your score, like your GRE score, to be honest, और आपकी जो प्रोफाइल है, आपको लगता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए फिट हो. There's certain groups on Facebook, there's certain advisors also, career advisors. You can consult them and ask them कि आपकी जो प्रोफाइल है, आपका जो स्कोर है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए फिट है. आपको गूगल पे भी मिल जाएगा ये. Yeah, it depends on that. Payal asked this question, which country is better for education? All right, so that's not, this question again does not have a specific answer to it. तो जैसा कि मैंने बोला, मशीन लर्निंग के लिए आई कैन स्पीक आउट. यूएस इज कुछ 10 डेकेड्स आगे इंडिया से. So there are better job opportunities in this field and better exposure to the practical world and all that. So yeah, it again depends on your field of interest, which you are actually aiming for. और ये फिर से डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, आपकी प्रोफाइल कैसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं. मतलब कोई एक फैक्टर नहीं है जो आपको डिसाइड कर देगा कि ओके ये कंट्री मेरे लिए सबसे अच्छी है. या मौलिक asked this question. Okay, I'm sorry. Um, Akshay has this question. Is there any scholarships for students? Yeah, sure there are. I was about to come to this also. Okay, तो जब भी आप अप्लाई करते हैं ना यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए, तो एप्लीकेशन प्रोसेस में ही जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है आपका, इनबिल्ट होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम. मतलब यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को इवैल्यूएट करती है बेसिकली, और फिर बताते हैं कि ओके ये इंसान इतने डॉलर, इतने $1000 की स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. इट अगेन डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटीज. कुछ यूनिवर्सिटीज बिल्कुल ही स्कॉलरशिप नहीं देती, कुछ यूनिवर्सिटीज 80% तक स्कॉलरशिप देती हैं. तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल अगेन एंड यूनिवर्सिटी ऑल्सो. या देयर सर्टेनली आर फाइनेंशियल असिस्टेंस, सो स्कॉलरशिप्स होती हैं. I'm sorry. Okay, so Yash has this question. What about accommodation? That's a pretty good question. Okay, so अभी हमने पूरा डिस्कस किया कि प्रोसीजर क्या है, which has obviously some of the points left. I'll go through them also towards the end of this. So, what about accommodation? Is the most, like, accommodation is the most challenging thing when you come here. क्योंकि you're basically coming एक ऐसी जगह जहाँ पर there's a lot of diversity. People speak different languages, they have different cultures, और अलग अलग level पे like they have differences, and they're not just the same. So they for like easing this process for you for accommodation, there's certain Facebook groups हर एक university के termed as accommodation of this university. तो वहाँ पर there are बहुत सारे लोग होते हैं. Like you can find Indian people also, Indian students. And और भी अगर आपको filters लगाने हैं, वो सब लगा के भी आपको accommodation easily मिल जाती है. Yeah, so accommodation is not a problem here, like in any state of the US. All right, Aishwarya has this question. Should I study online for GRE or go for any classes? All right, so I basically joined a coaching center for GRE, and personally, I didn't go to attend all the classes actually. तो इट्स लाइक मोर ऑफ अ सेल्फ स्टडी. मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप क्लासेस जॉइन नहीं करोगे तो आप कुछ मिस आउट कर रहे हो. मतलब देयर सो मेनी रिसोर्सेज, लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनलाइन पे देयर आर ईटीएस की टेस्ट सीरीज, केपलन, मैनहट्टन, इन सब की बुक्स भी अवेलेबल है और इनकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है. तो आप इजीली कर सकते हो घर पे बैठ के. बस यू शुड हैव दैट ज़ील, मतलब कि एक कोचिंग सेंटर का यही डिफरेंस है कि आपको एक ऐसे पुशअप मिलता रहता है कि ओके यू हैव टू डू दिस इज योर टारगेट. So if you can do it by yourself, it's like more than enough. You do not need any specific class for GRE. All right, Anushka has this question: how to apply for foreign universities procedure? Yeah, sure. So, okay, अप्लाई करने से पहले एज आई टोल्ड कि दो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए दो एग्जाम्स होते हैं, जीआरई एंड टॉफल. जीआरई इज बेसिकली और मैथ प्लस इंग्लिश टेस्टिंग एग्जाम. टॉफल इज प्योरली इंग्लिश टेस्टिंग एग्जाम. तो टॉफल बस ये देखना है कि ये देखने के लिए वो टॉफल देते हैं कि आप उनकी क्लास में बैठने के लायक हो, कि आपको समझ आ रहे हैं उनके लेक्चर्स, कि आप बोल पाओगे, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, राइट. सो दीज आर द थिंग्स इन टॉफल. टॉफल का एक पर्टिकुलर कट ऑफ होता है हर यूनिवर्सिटी के लिए, 100 on 120. या सो दैट्स द थिंग, नो मैटर यू स्कोर 119 और 118.
So this is the first step towards your application procedure, as you asked how to apply your two exams, GRE and TOEFL. Then of course you'll have to consider the deadlines, कि आप डेडलाइन से पहले अप्लाई कर रहे हैं, कौन सा सीजन में, लाइक फॉल सीजन में या स्प्रिंग सीजन में, किस में आपको एक्चुअली जाना है, ये भी देखना होगा. उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्ट करनी पड़ेंगी यूनिवर्सिटीज़ की आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है. For example, if you're applying to Ivy Leagues, so they generally require a score of 330 plus on 340. So that's the thing. All right, so the application process, again, they need your statement of purpose, your exam scores, your LORs, your transcripts. These are the main things that they require. Some of the universities ask for your resume also. Uh, Manjusha has this question. If I'm a mechanical engineer, which university should I prefer? All right, again, I'm so sorry. Since I'm a computer science student, so okay, but आप ये actually बहुत सारे Google पे आपको मिल जाएंगे the top universities for mechanical engineering, masters in mechanical engineering. तो आप वहाँ से shortlist कर सकते हैं. Like personally speaking, NYU is really good. Like NYU is really good for mechanical engineering. Yeah. Shivam has this question: from where should I start if I want to learn ML? All right, so I personally there are no such resources actually. So what I do is I start off with a problem and then think about, like, there's certain pages on Medium, there's certain courses on your yeah. I think Coursera also provides these courses. I primarily learned from Stanford's course of Andrew Ng. सो आई वुड से एंड्रू एनजी से आप शुरू कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक्चुअली आपको एक ग्रिप देगा मशीन लर्निंग पे, क्योंकि मशीन लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम मैथ, बिकॉज देर इज मैथ इन्वॉल्व एट एवरी स्टेप. सो start off with Andrew Ng's machine learning introduction to machine learning course, and then you could, like, बहुत सारे सोर्सेज हैं, मीडियम पे पेजेस हैं, आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी, scikit-learn and all that, so you can learn from that. Okay, Amit has this question. How's your college life of study and how you prepare for ML and AI? All right, so I did my undergrad from IGDTU. I hope nobody would have heard about that. So it's a really good, really decent and good university in Delhi. So yeah, it was really nice. The 4 years, basically, I started off with machine learning in my second year. As I told, it was during my internship at Delhi Police. I had to build up like a machine learning based automated system. So it was then that I started with machine learning. Yeah, it was really nice. It was pretty cool. Ashwarya has this question: any scholarships for education in US? Yeah, surely there are. मैंने पहले भी ये बताया था अभी. Somebody else also asked this question. Scholarships definitely हैं, काफ़ी सारी. It depends on the university you're applying to. कुछ universities काफ़ी हद तक waive कर देते हैं आपकी fee, tuition fee. कुछ universities बिल्कुल ही scholarship नहीं देती. तो this all depends on आपकी जो application है. मतलब कितनी strong applicant हो आप. क्योंकि उनके पास काफ़ी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, दे हैव टू शॉर्टलिस्ट सम हंड्रेड्स. सो स्कॉलरशिप भी डिपेंड करती है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ योर एप्लीकेशन. बेसिकली इट्स ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन इन द एंड. या ओके, सो just one second. Dhananjay has this question: is there an interview for the admission process? No, there isn't. कोई interview नहीं होता application process का. It is just like simply your application form and how strong your application is. There's no interview for master's application. Okay, Sai Facts has this question. How does placements procedures go over there? Okay, yeah, this is a pretty important question. कि आप यहाँ आ तो जाते हैं, उसके बाद what next? Like how to go about the placements. तो placements यहाँ पे जैसे इंडिया में यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग होती है, इधर कोई यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट नहीं होती है. इधर देयर इज सिंपली दिस ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स गोइंग ऑन थ्रू आउट द ईयर. ऐसा भी नहीं कि साल में 2 महीने के लिए यूनिवर्सिटी कंपनीज हायर करेंगे. पूरे साल चलती है हायरिंग, एंड इट्स टोटली ऑफ कैंपस. आप खुद से अप्लाई करोगे,
बस यूनिवर्सिटी का नाम है आपके साथ एंड योर एजुकेशन दैट यू आर करंटली परस्यूइंग देयर एंड या दैट्स ऑल। बस एक और डिफरेंट चीज़ होती है इधर कि यूनिवर्सिटी से टाई अप्स होते हैं कंपनीज़ के, कि वो इन पर्सन कैंपस पे आके इंटरव्यूज़ लेंगे। इट्स नॉट कुछ यूनिवर्सिटी रिक्रूटिंग जैसी चीज़, बट इट्स सिंपली ऐसा कि इसको ऐसा सोचो कि कंपनीज़ ने फिक्स कर दिया इंटरव्यू टाइम कॉलेज के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ कि ओके हम इस दिन 2 घंटे के लिए आएँगे इंटरव्यू के लिए एंड इट्स नॉट अ मैंडेटरी थिंग कि वो सोच के आते हैं कि इतने लोग लेने हैं। जैसे इंडिया में होती है प्लेसमेंट्स कि दे हैव दिस इन देयर माइंड कि ओके वी हैव टू टेक दीज़ मैनी पीपल। हियर इट्स नॉट लाइक दैट। तो इधर इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। इट्स काइंडा ऑफ कैंपस ओनली। सो खुद से आप अप्लाई करते हो। Okay, Sarvesh has this question. When should we start the application process for winter intake? Okay, I'm assuming the winter intake, you mean the spring intake. That is the January session. Yeah, so as I told कि January session शुरू होता है आपका obviously spring session आपका शुरू होता है जनवरी में, तो उसके लिए you'll definitely have to apply लाइक कितना पहले आपको एग्ज़ाम की आपको अपना एग्ज़ाम का स्कोर भी भेजना है यूनिवर्सिटी को। कुछ डेडलाइन होती है मार्च के अराउंड, तो मार्च से 3-4 हफ्ते पहले लाइक 3-4 हफ्ते पहले आपको अपना स्कोर ईटीएस के थ्रू भेजना है वहाँ पे। सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन आपको फिर पूरा सोचना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक अ प्रॉपर रोड मैप कि आपको कब शुरू करनी है प्रिपरेशन, कब आपको अप्लाई करना है, बिफोर द डेडलाइन श्योरली। अदरवाइज़ वो कंसिडर भी नहीं करते आपकी एप्लीकेशन। या सो Aliaskar has this question. Is it good to do MS after the grad, or should get work exposure of 1 to 2 year industry experience might be advantages to you to do? Uh, all right. So इस क्वेश्चन का भी देयर इज नो स्पेसिफिक आंसर। बेसिकली 2 चीज़ें हैं कि अगर आप डायरेक्टली ग्रेजुएशन मतलब डायरेक्टली अंडरग्रेड के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लाइक आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपका पूरा स्कोर, पूरी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। देन देयर आर हाई चांसेस कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी मास्टर्स के लिए। और अगर आप वर्क एक्सपोज़र के साथ भी जा रहे हैं 1-2 साल के, द मेन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो आपने काम किया है 1-2 साल इंडस्ट्री में, इज़ दैट इवन रेलेवेंट टू व्हाट यू आर अप्लाइंग फॉर? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैकेनिकल इंडस्ट्री में काम किया 2 साल, 1 साल और आप अप्लाई कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, तो वो रेलेवेंट ही नहीं हुआ ना आपके एप्लीकेशन के। तो अगर रेलेवेंट वर्क आप कर रहे हैं और आपका काफ़ी अच्छा वर्क एक्सपीरियंस रहा है, तो यू कैन एक्चुअली गो आफ्टर 1-2 ईयर ऑफ इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। Otherwise, if you have a really good and decent profile before even like the work exposure, you can directly apply for your master's application, surely. All right. So, Chetan has this question: US and university exam pattern. All right. So, the most important, like I would say, सबसे काफ़ी different चीज़ जो इधर है, considering the exam pattern from India, is that exams यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा practical होते हैं। They have these like weekly assignments. Almost every university in US weekly assignments होते हैं based on your practical implication and how you go about that course or the subject. और एग्जाम्स जनरली कुछ फिक्स टाइमिंग नहीं होता जैसे इंडिया में देयर आर फाइनल्स एंड ऑल दैट। इधर दे कैन बी प्रोजेक्ट बेस्ड, दे कैन हैपन अराउंड एनी टाइम, लाइक दे कैन बी सरप्राइज टेस्ट एंड दे आर मोर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड, मोर स्ट्रक्चर्ड ऑल्सो। दैट्स द मेन डिफरेंस। Akshay has this question. Can you explain how had started preparing for exam and tell us how much time you've given to study which thing you feel that most important for GRE? All right, again. So I I was a fall admit here, so my deadline was around December to be honest. तो मैंने कुछ नवंबर में अपने स्कोर्स भेजने शुरू कर दिए थे यूनिवर्सिटीज़ को एंड मैंने जीआरई दिया था अक्टूबर में। And I started to prepare like 2 months prior to October. Yeah. So also you do not need to give that much time to study. Like you must have given for your JE advanced and JE main or other engineering exams. So how much time? I think
it also depends on how you study. अगर आप बहुत ही अच्छे से कर रहे हो, रोज़ के वोकैब्युलरी अच्छे से कर रहे हो, बाकी इंग्लिश पे फ़ोकस कर रहे हो एंड मैथ्स अच्छे से कर रहे हो, तो 3 to 4 hours every day should be fine for you, like in a week, 3 to 4 hours every day. So 1 month should be sufficient considering 3 4 days, 3 to 4 hours every day. Or which thing do I feel is the most important for GRE? There's no such thing as such. जैसा मैंने पहले भी बोला, it's basically a compilation of every step. It's not just आपका GRE score, yeah, for your application. GRE के लिए सबसे ज़्यादा important क्या है? I was pretty decent at maths because being a computer science student. So, if you are actually decent at maths, so math should be easy one for you. But English is actually tricky for GRE. तो verbal में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, रोज के vocabulary का एक चार्ट बना के, and रोज का how you solve the problems, go about like improving your reading and all that. So yeah, reading, like if English is the easiest thing for you, then I think math should be the trickiest one for you, and it basically varies कि आपका किसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप कैसे लेना चाह रहे हो। मतलब ये भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्योंकि एग्ज़ाम ईज़ी है, जीआरई इज़ नॉट अ डिफिकल्ट एग्ज़ाम। सो इट्स ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैथ्स इज़ प्रीटी सिंपल एंड इंग्लिश इज़ द ट्रिकी वन एंड नॉट दैट ट्रिकी। अगर आप 1 महीने अच्छे से कर रहे हैं ईटीएस की टेस्ट सीरीज़ और सब, तो आप ईज़िली क्रैक कर सकते हो बहुत अच्छे स्कोर से। Yash asked this question, what about the placements after MS? Yeah, so I just told that the placements are basically more of off-campus based. There are no on-campus placement drives here. तो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, खुद से अप्लाई करना पड़ेगा. That's the thing. And options बहुत हैं. Opportunities are like billions over here. हर एक कंपनी का headquarter and like there's so many opportunities. तो प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं. Almost everybody, like 90%, more than that maybe. कुछ लोग पीएचडी के लिए चले जाते हैं आफ्टर देयर मास्टर्स, कुछ लोग जो प्योरली ऐसे प्लेसमेंट के लिए एम कर रहे होते हैं, दे डेफिनिटली गेट इट। Okay, Manjushta has this question, what are the opportunities after MS? Yeah, so there are like many opportunities after MS. There are some people who like, want to go for their PhDs. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीएचडी छोड़ के मास्टर्स के बाद एमबीए के लिए चले जाते हैं। तो एमबीए अगर आपको फिर ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन-सी डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको एमबीए भी यूएस से करना है, एमएस करने के बाद, तो ज़्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है, एमएस के बाद, फॉर योर एमबीए एप्लीकेशन। द नेक्स्ट रोड मैप इज़ यू कैन डायरेक्टली अप्लाई फॉर योर पीएचडी। पीएचडी में ज़्यादातर उनको ये देखना होता है बेसिकली कि आपने कितनी रिसर्च की अपनी मास्टर्स में। So it's all about your thesis, your project work, your research papers, and all of that. And the third option is you directly go for placements for company hiring. Yeah. So third option, considering बहुत सारी companies हैं, बहुत सारे opportunities हैं इधर, तो yeah, placements की भी कोई कमी नहीं है, and you have ample of opportunities after MS here. Kshitija has this question, for computer engineering student, what things are important for applying for US university? Yeah, so like I said, the most important thing for applying, being specific to your field is कि आपने अपनी फील्ड में कितना काम किया है। आपने इंटर्नशिप्स करी होंगी, प्रोजेक्ट्स करे होंगे, आपका क्या वर्क एक्सपीरियंस है इन योर पर्टिकुलर फील्ड इज़ व्हाट दैट मैटर्स फॉर लाइक योर एप्लीकेशन आपकी फील्ड में। Yeah, so that's important. Okay, there's another question. Is there any way to study abroad without GRE? Honestly speaking, 99.9% universities need your GRE. मतलब हार्डली एक आध यूनिवर्सिटी होगी जिसको जीआरई नहीं चाहिए होगा आपका, एंड वो भी यूनिवर्सिटीज बोलते हैं कि उनको आपका जीआरई नहीं चाहिए, बट दे समहाउ वांट योर जीआरई, क्योंकि अगर उनको एक फिल्टर लगाना है ना कि 2 स्टूडेंट्स हैं उनके पास और एक ने जीआरई दिया है, एक ने नहीं दिया, तो दे विल डेफिनिटली कंसिडर द वन जिसने जीआरई दिया है। That's the main most important thing of taking up your GRE. Yeah. I'm so sorry. Anushka has this question. I'm doing many courses on Coursera. Do they consider these courses as valid during master's admission? What you can do is, I think, yeah, you can always, like, you should actually
राइट? जो भी आप कोर्सेज़ कर रहे हो, कोर्सेरा पे या किसी और वेबसाइट पे, आपको हमेशा वो कोर्सेज़ लिखने चाहिए अपने रिज़्यूमे में। रिज़्यूमे भी एक प्लस पॉइंट है, जैसे मैंने अभी जीआरई के लिए बोला, वैसे रिज़्यूमे भी एक प्लस पॉइंट है। उनको दिख रहा है आपका एक्चुअल काम, आपकी डेडिकेशन इन योर फील्ड। तो अगर आप लिखोगे कि आपने ये कोर्सेज़ किए हैं, तो डेफ़िनिटली हेल्प करेगा आपके एप्लीकेशन में। फिर से एक ये डिसाइडिंग फैक्टर की तरह हो गया कि उनके पास 2 लोग हैं, दोनों ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हैं एंड एक बंदा है जिसने एक्स्ट्रा कोर्सेज़ भी करे हैं फील्ड रिलेटेड। So yeah, definitely it'll pull you upon that person and you will be the one who will be chosen. Yeah. So the next question is, what are the major challenges while living abroad? Okay, that's a pretty good question. मेजर चैलेंजेस ये हैं बेसिकली कि एक तो आप ऐसे देश में आ रहे हो जहाँ पे बहुत सारे डाइवर्सिटी के लोग हैं, डिफरेंट खाना है, डिफरेंट रहने का स्टाइल है, डिफरेंट लैंग्वेजेस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिफरेंट कल्चर्स है। तो बहुत सारे लेवल्स पे आप कनेक्ट कर पाओगे कि ओके मैंने भी इस फील्ड में काम किया, इस इंसान ने भी। सो यूल बी लाइक एट सर्टन लेवल्स, बट कुछ लेवल्स पे यूल बी टोटली डिफरेंट। सो इसी चीज़ में ये जो डिफरेंस है लर्निंग में, इट एक्चुअली एक्सेलरेट्स योर लर्निंग प्रोसीजर इन मैनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो लेकिन चैलेंजेस भी बहुत है, चैलेंजेस सच एज, एक तो लिविंग एक्सपेंसेस। यू रियलाइज कि डायरेक्टली इंडिया से स्पेशली आने में करेंसी का ही डिफरेंस, लाइक पर्सनली स्पीकिंग इनटू 70 और 71 करके यू विल सी द डिफरेंस कि ऑल राइट लिविंग स्टैंडर्ड्स में कितना डिफरेंस है। दैट्स अ मेजर चैलेंज टू टैकल। फिर अकोमोडेशन कैसे देखने हैं, किस टाइप ऑफ पीपल के साथ आपको रहना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर आपको ये देखना है कि यू विल सी कि यूएस के स्टूडेंट्स जो करते आए हैं हमेशा से प्रैक्टिकल नॉलेज, दे आर इम्प्लीमेंटिंग दैट। तो वो स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपके कोर्स में परफॉर्म कर रहे हैं और आप जैसे करोगे, दे विल बी डिफरेंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो यू विल हैव टू टैकल दैट ऑल्सो कि ओके दिस स्टूडेंट इज डूइंग रियली वेल इन दिस, आई हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स। तो वो एफर्ट्स आपको अलग से डालने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है अपने कोर्स में। सो देर आर सो मेनी थिंग्स, काफ़ी सारे चैलेंजेस। Food, personally speaking, like vegetarian options explore karna, because there's non-veg all around, but there certainly are vegetarian options. So this is a myth कि आपको नहीं मिलेंगे, challenges होंगे definitely, but you'll figure them out easily. All right, so next question is actually Yash. All right, Yash has this question that he's interested in cybersecurity, but he cannot find a proper path or resource. So, is it actually necessary for internships to the field we want to apply for MS? Um, yeah, it is. So, if you're interested in cybersecurity, हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है। कुछ यूनिवर्सिटीज में दे हैव दिस MS in cybersecurity. Some universities completely name it as masters in computer science. उसके अंदर दे हैव दिस डिविजन ऑफ साइबर सिक्योरिटी। लेकिन जब आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे तो दे एक्चुअली एक्सप्लिसिटली आस्क यू कि आपको किस में अप्लाई करना है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर और व्हाट। सो या internship applications are definitely field specific. Ashwarya has this question, what do you exactly mean by strong application? Is it your GPA? All right, so like I think I'll just put on my scores. Like I'll discuss my scores with you to आपको एक clear image आ जाएगी कि कैसे. So I got 325 in GRE. Yeah, 325 in GRE and 114 on TOEFL. That was, both of the scores are pretty good, and my GPA was also 8.2 or something. So that is actually a strong application. Does not mean कि अगर, हाँ, इसको ऐसे देखिए कि अगर आपका जीआरई 330 प्लस जा रहा है, 325 प्लस जा रहा है, तो इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड स्कोर। मतलब एनीथिंग अबाउट अबव 320 इज अ वेरी गुड स्कोर इन जीआरई। और टॉफल इतना मैटर नहीं करता अगर आपका 100 से ऊपर है, तो टॉफल इज जस्ट लाइक कट ऑफ क्राइटेरिया। तो आपका जीपीए शुड बी स्ट्रांग, या डेफिनेटली अगर आपका जीआरई मान लो 320 है और आपका जीपीए भी 66.7 या कुछ है, तो आपके जीपीए ने एकदम से आपके स्कोर को नीचे कर दिया ओवरऑल। लाइक क्या इम्पैक्ट होगा आपके एप्लीकेशन का। अगर कोई एक और इंसान है जिसका जीपीए इज बेसिकली 8.1 से, or GRE is 320, so definitely that person be on a higher position. तो अगर आपका जीपीए मान लो 7.2 से नीचे है, 7.5 से नीचे है,
तो आपको एम करना चाहिए जीआरई में कि आपका 325 प्लस आए. So that is what I mean by strong application. And plus your like internship experience also. That's really important. क्योंकि दे लोग कि आपने क्या पर्टिकुलर इस फील्ड में काम किया है कि yes, you are eligible to study here. They're pretty competitive. Universities here are pretty competitive. Okay, Majusha has this question. Does certificate really matters for the placement? Can you just clarify which type of certificate are you talking about? कौन सा सर्टिफिकेट आप स्पेसिफिकली बोल रहे हैं इसमें? Okay, Yash has this question. Even I heard that after getting full-time working experience, we get 50% scholarship. So is it true? Yeah, definitely. तो ये मैंने पहले भी बोला था कि स्कॉलरशिप जो आपको मिलेगी डिपेंड्स ऑन कितनी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है आपकी. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है. हो सकता है 0% मिले, हो सकता है 10% मिले. तो इट डिपेंड्स कि आपकी पूरी प्रोफाइल उनको कैसी लग रही है. दैट्स द मेन थिंग. That's okay. Certificate really matters for the placements. Okay, so the placements here are थोड़ी सी डिफरेंट इंडिया से अगर आप कंपेयर करोगे. तो प्लेसमेंट्स इधर कुछ ऐसे होते हैं कि दे हैव सर्टेन लेवल्स. मतलब पहले एक ऑनलाइन आपका टेस्ट होगा, उसके बाद एक थर्ड पार्टी होगी जो रिव्यू करेगी आपके रिजल्ट्स को. देन दे विल सेंड दैट रिजल्ट्स टू द कंपनी जिस पे भी आप अप्लाई कर रहे हो. फिर कंपनी के 2-3 राउंड्स होंगे इंटरव्यूज के डेफिनेटली. तो सर्टिफिकेट्स आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा नेक्स्ट स्टेप्स में. मतलब जो आपका सेकंड थर्ड राउंड होगा मे बी, इनिशियली नहीं हेल्प करते सर्टिफिकेट्स. इट्स जस्ट एन एड ऑन टू व्हाट नॉलेज यू हैव एक्वायर्ड, बट दे नॉट अ ट्रू, दे डू नॉट गिव अ ट्रू सेंस कि आपको कितना आता है. उसके लिए आपका पर्सनली लाइक वो इंडिविजुअली वन ऑन वन टेस्ट करते हैं कंडक्ट. Naveen has this question. What is your experience for applying placements? All right. So since I'm a fresher here and it's my first year of masters here, so मेरे को internship के लिए apply कर रही थी मैं, but due to like this like very unwanted situations due to COVID-19, there have been shutdowns to many of the internships here. So yeah, that's the thing. What is GRE? Okay, so GRE is basically your graduate record examination, which tests you on your maths and English, verbal and quant, to be honest, speaking in terms of GRE. तो GRE बेसिकली आपके एनालिटिकल और आपकी वर्बल स्किल्स देखता है कि आप एलिजिबल हो, कि आप एक्चुअली एलिजिबल हो, आपके पास उतनी क्रिटिकली आप सोच पा रहे हैं यूएस यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए. सो दैट्स द थिंग. दैट्स मोर ऑफ GRE. हाउ टू सर्च फॉर जॉब ऑफ कैंपस? या सो इधर इतनी दिक्कत नहीं होती ऑफ कैंपस जॉब्स के लिए सर्च करने में, क्योंकि इधर बहुत फ्रिक्वेंटली करियर फेयर्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल एनवाईयू में हर एक सेमेस्टर में एक करियर फेयर होता है जिधर लाइक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आती हैं एंड दे हैव देयर एप्लीकेशन प्रोसीजर. कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज ऑन द स्पॉट उसी दिन अपने इंटरव्यूज कंडक्ट कर देती हैं. सो इट्स लाइक दैट. सो यू हैव टू सर्च. यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर जाओगे, यू विल सी हाउ टू गो अबाउट देयर एप्लीकेशन प्रोसेस. आपके कॉलेज में आ रही होंगी, यूनिवर्सिटी में आ रही होंगी कंपनीज करियर फेयर में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा उनका पूरा ब्रोशर्स. एंड स्पीकिंग टू द कंपनी प्रोफेशनल्स, यू गेट टू नो लाइक व्हाट इज देयर एक्चुअल जॉब प्रोसीजर. या please give us guideline about SOP. All right. Okay, so basically, so there are certain misconceptions about your SOP, honestly speaking. कुछ लोग को बेसिकली ये लगता है कि एसओपी में आप जितना भी ज़्यादा, एसओपी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि आप जितना इलैबोरेट करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. इट्स नॉट द ट्रूथ. इट्स नॉट द ट्रूथ एट ऑल. सो एसओपी इज़ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए होगा, क्योंकि आपको यू शुड, एक तो पहली चीज़ कि एसओपी के लिए आपको प्रॉपर टाइम निकालना चाहिए कि कुछ हफ्ते या मे बी 1 महीना टू राइट इट करेक्टली. लिखा आपने अच्छे से, फिर आपको रिव्यू कराना चाहिए अच्छे लोगों से. Like call it your professors, call it the like career counselors or the foreign university counselors, for example. Yeah, तो also कहीं से कॉपी नहीं करना चाहिए एसओपी. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, खुद से. इट इज बेसिकली a sample
कि आप क्या लिख पा रहे हो आपके बारे में। मतलब आप एक स्ट्रेंजर हो यूनिवर्सिटी के लिए और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लैग चेक होता है यूनिवर्सिटी के पास। तो अगर आप कॉपी करोगे उसी सेकंड आपकी पूरी एप्लीकेशन डिसमिस हो जाएगी। यू आर लाइक एलिमिनेटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। मे बी यू आर ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। तो एसओपी बहुत ही जितना पर्सनल लिख सकते हो ना, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है। तो इट्स बेसिकली it gives them an idea about you, like who you are as a person, what you've done, which fields have you worked in, and all that. तो या जितना पर्सनल उसको लिख सकते हो उतना पर्सनल लिखो। ये चीज़ देख लेना कि आप दे हैव गिवन यू वन चांस टू एक्सप्लेन कि हाउ एज अ स्ट्रेंजर यू आर अ गुड फिट फॉर देयर यूनिवर्सिटी। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। उसमें क्या-क्या होना चाहिए आई विल टेल यू। आपका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, ये नहीं कि व्हाट आर योर हॉबीज़, मोर ऑफ एन एकेडमिक वन कि आप क्या आपके इंटरेस्ट हैं, कौन-सी फ़ील्ड और ये सब। देन व्हाई यू चोज़ योर फ़ील्ड ऑफ स्टडी, जिस भी फ़ील्ड ऑफ स्टडी में आप अप्लाई कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं, व्हाई डिड यू चूज़ दैट? उसमें एक पैराग्राफ लिखिए कि ओके, मेरे को इस फ़ील्ड में मैंने काम किया है, दैट्स व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस एंड इसीलिए मेरे को लगता है कि मैं अच्छा कर पाऊँगा इस फ़ील्ड में। सो दैट्स अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, सॉरी। Yeah, and the next important thing is basically what have you done in the past to make you capable enough to take a graduate program in your field. So ये भी your past experience, your internships, और अगर आप वर्क के पास जा रहे हैं, तो आपका जो जॉब में रहा है एक्सपीरियंस, वो सब कैसे आपका पूरा जितना भी एक्सपीरियंस है, वो रेलेवेंट है टू फॉर यू टू क्वालिफाई टू बी अ स्ट्रॉन्ग पर्सन ऑफ देयर एप्लीकेशन। सो दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। देन ऑल्सो योर फ्यूचर गोल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लिखिए कि शॉर्ट टर्म में आप क्या एम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में आप क्या एम कर रहे हैं। और एक पैराग्राफ, बहुत छोटा पैराग्राफ आपको लिखना पड़ेगा कि हाउ डू यू थिंक कि आप ऐड करोगे यूनिवर्सिटी की डाइवर्सिटी में या एकेडमिक एक्सेलेंस में। दैट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स ऑल अबाउट एसओपी। इट्स अ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट। ओके, Kshitija, university admission depends on application and GRE score, right? Then what is the ratio to get admission in US university in between GRE score and resume? Again, all right. So since I told you about your GRE score and your GPA, so the next important thing is आपका resume और GRE score में क्या relevance है? Like what is the relation? कैसे आप balance करोगे इस ratio को? तो ऐसा कोई balance जैसी चीज़ नहीं है। अब इसको आप ऐसे देखिए कि आपके जीआरई में कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर नहीं है 330 प्लस। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्कोर डिसेंट है 320 प्लस और से 314 प्लस और 315 प्लस, और आपका रिज्यूमे यानी आपका जो आपने इंटर्नशिप पे काम किया उस पे आपने ज़्यादा फोकस किया एग्ज़ाम में स्कोर लाने से। सो दे विल डेफिनिटली कंसिडर, क्योंकि उनका कट ऑफ कुछ ऐसा होता है 310, 315 इसके ऊपर। और अगर आप कट ऑफ भी मीट नहीं कर रहे तो फिर आपका जितना भी रिज्यूमे पे लिखा है सब यूज़लेस है। मतलब आपका जीआरई एक काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर हो गया ना कि वो आपका रिज्यूमे पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। सो इट डिपेंड्स ऑन दैट। Okay, Dhananjay has this question. Can we directly apply for internship job after graduation in India? Yeah, you could have. But then, speaking from the situation right now in the US and broadly speaking for the entire world right now due to COVID-19, it has become pretty hard for you to like directly apply for job or internship being outside the US. अगर आप इंडिया से directly apply करोगे, you won't get the visa right now. It's really difficult. It's like Trump has made this new law also, which might be like amended after a few months or so if the situation does not get better here. तो अभी के लिए then there's no scope कि आप directly apply कर सकते हो जॉब या internship के लिए इंडिया में रहते हुए। Aniket has this question. Do extracurricular activities really matter in profile? Yeah, they do. They do matter. But then again, आप academic prospect से देखो, मतलब अगर आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एसओपी में फ्लॉन्ट अबाउट इट कि आई डिड दिस एंड दे विल बी इम्प्रेस्ड, क्योंकि एसओपी वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं काफी टाइम देके और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एसओपी। सो या दे डू काउंट डेफिनेटली। Manjusha, certificates related to curricular activities or academics. Yeah, you can always include certificates. मतलब वो फ्री में अगर आपको एक फ़िल्टर होगा ना कि 2 लोगों में से चूज़ करना है और दोनों सेम लेवल पे हैं, तो सर्टिफिकेट वाले इंसान को डेफिनिटली प्रेफ़रेंस मिलेगी।
So you should always upload your certificates everywhere. You should like talk about them in your resume. अपने LinkedIn profile पे upload करो. Yeah, like that. Dhananjay, I mean job in abroad while I'm graduate in India. Yeah, so अगर आप यहाँ से अपनी हायर स्टडीज करते हो ना, मास्टर्स स्पेशली एमएस और पीएचडी फॉर एग्जांपल, तो आपके जॉब के चांसेस डेफिनेटली हैं यूएस में। लेकिन अगर आप डायरेक्टली इंडिया से आ रहे हो बीटेक करके, सो आपके जॉब के चांसेस काफी कम है इस टाइम पे, बिकॉज कोविड एंड यू नो लाइक द सिचुएशन इजंट रियली गुड फॉर any place in the world, right? Yeah, so that's the thing. Can you explain what were your steps and what did you do, okay, to go from IGDTU to NYU, and what is IGDTU? All right, so starting off, I did my undergrad from IGDTU-W. It's Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. It's in New Delhi. So yeah, what steps did I take? I'll like quickly review all the things. So during my first year, I primarily focused on like building my computer skills, like coding skills in C and C++. In my second year of undergraduation, I took up this internship. I was basically selected for this internship for Delhi Police, wherein I had to build two software systems for them. एक था उसमें मशीन लर्निंग, प्योर मशीन लर्निंग सिस्टम, दूसरा था डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग सिस्टम. दोनों वर बेसिकली वेबसाइट्स एंड दे यूज डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. लाइक एक में मशीन लर्निंग एल्गोज यूज हुए थे, लाइक प्राइमरीली डन इन पाइथन. एंड जो डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग सिस्टम था, दैट वाज बेसिकली अ वेब एप्लीकेशन टू ट्रैक कि फाइल्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, कौन सा पुलिस ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, एंड ऑल ऑफ दैट. First third year of undergraduation mein, I started like I thought about, okay, why the US, because obviously they are way ahead of India in especially computer science, if we talk about that. And also क्योंकि मेरे को specially चाहिए था machine learning में specialization, तो बीटेक में you do not get a specialization or something. आप बस normal जो core courses होते हैं आप पढ़ते हो. And masters में you can opt for कोई भी specialization. That's the main plus point of having a masters, and more of research based also. Then third year May I did an internship at DRDO, which was again an AI or machine learning based internship. Then I started off with my application at the very start of my fourth year of undergrad. And yeah, then I like it was a normal procedure as I told about. So that was the main step. I got my letters of recommendation from one of the Delhi Police DIG. Then, yeah, also to add on, you'll need 3 letters of recommendation minimum for every university. So think beforehand कि आप किससे लोगे letters of recommendation, and they should be at good positions ताकि university भी जब देखे कि okay इस इंसान ने दिया है recommendation, so he is good enough, अच्छी position पे है, so आपको एक plus point मिलेगा इससे. Yeah. So I got 3 LORs, one from my HOD, head of department, one from the professor I worked under, and one from the Delhi Police DIG. So yeah, that's all about my application process. Writing my SOP took about 1 to 2 weeks because it's a very like time consuming task, and it's a very important task also. Yeah. So the next question is, what is the syllabus of math for GRE? All right, so math is pretty simple for GRE. It's, I would say, 10th level tak ka maths is enough for your GRE. Yeah. That's all. GRE ka math is really simple if you have background in math. अगर आपने 12th तक math किया है, it'll be pretty simple for you. Naveen has this question, did I have to apply internship for placement? नो नॉट मैंडेटरी. अगर आप डायरेक्टली भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको इंटर्नशिप नहीं मिली फॉर एग्जांपल, तो आप डायरेक्टली भी प्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो. बस मेक श्योर कि आपका रिज्यूमे स्ट्रांग है, आपकी एप्लीकेशन फॉर द प्लेसमेंट इज स्ट्रांग, एंड यू हैव गुड क्वालिटीज लाइक good technical skills if you're applying for a tech internship and all of that. Anushka has this question, if I have a good GPA and have done many courses on Coursera and I've participated in many extracurricular activities as well, but does not have any internship, does that mean my profile is not good? No, not at all. So, as I told before, कि your GRE, your application is basically balance हर एक चीज में. अगर आपका GRE कम है, तो आपका GPA बहुत अच्छा है. Okay, it's balanced here.
अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं है बट आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर सो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डेफ़िनिटली ऐड ऑन करेंगी, बट एकेडमिक लेवल पे अगर आप देखोगे, तो वो इतना नहीं इम्पैक्ट करेंगी कि अगर आपकी इंटर्नशिप नहीं है बिल्कुल भी, या आपका कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और सिर्फ़ एक्स्ट्रा करिकुलर है और आप किसी भी किसी भी टेक फील्ड ऑफ स्टडी में अप्लाई कर रहे हो, सो इतना कोई प्लस पॉइंट नहीं होगा उससे। तो ऐसा ट्राई करो कि कोई प्रोजेक्ट करो इन योर फील्ड, बी इट लाइक स्पीकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस में देयर आर सो मेनी टेक्नोलॉजीज़, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करो ऐसे एंड गो अबाउट इट। Okay, where are you from? Okay, so I'm from Delhi, India. Can I get an NYU? Yes, Himanshu, you surely can. You just need a profile for that. Uh, okay. How did you prepare for the GR exam? It's a good question. So GRE के लिए you have many resources. ETS से शुरू करो. ETS का आपको book भी मिल जाएगा online. And there are test series also. Beginner level and like going on. जैसे जैसे आप आगे जाओगे अच्छा level हो जाएगा test series का. केपलिन की बुक्स आती हैं, केपलिन की टेस्ट सीरीज़ आती है, मैनहट्टन की बुक्स आती है, टेस्ट सीरीज़ आती हैं। ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं। वोकैब्युलरी आप आराम से कर सकते हो एंड जो मेरे को बहुत हेल्पफुल लगी थी वाज़ वर्ड पावर मेड ईज़ी। इट्स अ मैजिकल बुक, सो इट्स बेसिकली लाइक अ वर्शिप फॉर मी। सो इफ यू डू दैट आपको कुछ भी लाइक कोई भी और बुक अलग से करने की ज़रूरत नहीं है फॉर वर्बल। मैथ्स के लिए you'll get samples on the internet. You'll get samples from ETS, you'll get samples from Kaplan and Princeton. आराम से आप वहाँ से देख के कॉन्ट कर सकते हो। Verbal also. Okay, Abhishek has this question. Any tips to improve for verbal in GRE? So verbal is basically a rigorous process. अगर आपका verbal initially strong नहीं है, तो आप रोज का एक टारगेट सेट कर लो कि और राइट मेरे को रोज के 20 वर्ड्स वोकैबुलरी में लर्न करने हैं या मेरे को 2 रीडिंग करनी है, तो थिंग्स लाइक दैट। तो इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लाइक go about your verbal. That's the main thing. Is there any official website for US universities for MS? There's no such official website for all the universities, but हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एक वेबसाइट है। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम सर्च करोगे, हर एक उसी यूनिवर्सिटी की आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन प्रोसेस मिलेगा, सब चीज़ें मिलेंगी। या या एमबीए और एमएस व्हिच इज़ बेटर? या सो दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। एमबीए इज़ टोटली योर लीडरशिप क्वालिटीज़, हाउ टू गो इनटू मैनेजमेंट। एमएस इज़ हाउ टू गो इनटू रिसर्च इन योर पर्टिकुलर फील्ड। तो आपको ये देखना है कि आपको जेनेरिकली मैनेजमेंट में जाना है या आपको अपनी फील्ड में मास्टर्स करनी है, रिसर्च करनी है, पढ़ाई करनी है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका कहाँ ज़्यादा इंक्लिनेशन है। Which app is beneficial for GR exam where we can update ourselves? Okay, for exam. There's no such app, honestly speaking, but yeah, there surely are websites, as I talked about. ETS is a really good. ETS आपका GRE कंडक्ट करता है। ETS आपका स्कोर भेजता है यूनिवर्सिटीज़ को। तो ETS की अगर आप बुक भी अच्छे से कर लोगे, that's more than sufficient for you to prepare for your GRE. Akshay has this question. I would like to know about if we rated Coder on HackerEarth, okay, then university is giving importance. ऑलराइट, तो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये कि अगर आप बहुत अच्छे कोडर हैं, हैकरअर्थ, हैकररैंक, बीट और कोडशेयर फॉर एग्जांपल, तो यूनिवर्सिटी डेफिनेटली कंसिडर करेगी अगर आप अपने रिज्यूमे पे लिखोगे कि ओके मेरी ये रैंक है हैकरअर्थ पे, हैकर रैंक पे, तो कंसिडर करेंगे डेफिनेटली। बट इट्स मोर ऑफ आपको एक रिसर्च चीज़ में जा रहे हो ना मास्टर्स के लिए, तो ये डेफ़िनेटली हेल्प करेगा, बट मेक श्योर कि आपकी बाकी प्रोफ़ाइल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके अकॉर्डिंगली। मतलब ये तो है, तो डेफ़िनेटली इट्स अ प्लस पॉइंट, बट इसकी वज़ह से आप ये नहीं बोल सकते कि आपका जीआरई में कम है, सो दिस शुड कॉम्पेंसेट फॉर दैट। इट्स नथिंग लाइक दैट। हाउ यू गॉट इंटर्नशिप इन डीआरडीओ? ओके, डीआरडीओ इंटर्नशिप, ऑलराइट। सो डीआरडीओ का अपना एक प्रोसेस होता है कि यू लाइक गो देयर फिज़िकली टू द सेंटर and you submit your application there. But I got in touch with one of the scientists there. He was primarily working on deep learning. I emailed him my resume and my profile, and he conducted 2 rounds of interviews for me. So mine was slightly different from others. तो सबका एक different वो होता है internship process. मेरा कुछ ऐसा था.
Harsh has this question. What did you think about online classes for poor student on TV? So not every online class is paid. There are certain free online courses also, so everybody has access to them. Akshay has this question: is there weightage to competitions like Smart India Hackathon to shortlist candidate? Sorry, so हाँ, फिर से ये वही चीज़ होगी कि आप अपने रिज्यूमे पे डेफिनेटली लिख सकते हो कि आप स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में जीत के आए हो या कुछ ऐसा, तो हेल्प करेगा श्योरली। बट मेक श्योर कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एसओपी, एलओआर, एग्ज़ाम स्कोर्स, वो भी तो आपके काफ़ी परफेक्ट होने चाहिए ना यूनिवर्सिटी जिससे आपको शॉर्टलिस्ट करेगी। मतलब इसको ऐसे देखो कि 2 लोग हैं उनके पास जिनके जीआरई स्कोर्स एकदम ही सेम है, पूरी प्रोफाइल एकदम सेम है, अब उनको एक ही बच्चे को लेना है। तो दे विल सी कि ओके अब रिज़्यूमे देख लेते हैं, नेक्स्ट फ़िल्टर, रिज़्यूमे में अगर स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन विनर है, ओके इसमें ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। या इसने उस टाइम पे अच्छा परफ़ॉर्म किया, ओके सो वी विल गो फॉर दिस पर्सन। सो इट्स लाइक दैट। इट्स बेसिकली अ मिक्स्ड अप थिंग। Saurav has this question: is this current situation will be going to affect admits in US? It should not. It should not definitely affect the students coming here. F1 पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा स्टूडेंट वीजा पे. It's just the same. Pooja has this question: which option is better after graduation, job or going for higher studies? अगेन मतलब ये डिपेंड करता है, अगर आप हायर स्टडीज चूज कर रहे हो ना तो आपको बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका बजट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो एजुकेशन के लिए, आप कितना टाइम तक लाइक आपकी कोई फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्जाम में, ये सब चीज़ें आप कंसिडर करोगे, आपकी एप्लीकेशन स्ट्रांग है, जीपीए अच्छा है, लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन हो पा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कंसिडर करोगे तब आप अप्लाई करोगे। और अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हो तो मेक श्योर अगर आप बाद में जाके 1-2 साल बाद या मे बी मोर years, so you should be your application should be strong enough और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो रेलेवेंट होना चाहिए कि अच्छा, अगर आप कंप्यूटर साइंस में आपका वर्क एक्सपीरियंस है और अगर आप कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर रहे हो 2-3 साल बाद, तो इट विल डेफिनिटली बी अ प्लस पॉइंट आपके एप्लीकेशन में। कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं हो रहा उससे। Okay, Anvit has this question: NYU versus UIUC versus UT Austin. All right, so yeah, so I chose NYU personally out of all three that I got into. So it's primarily because all three of them are definitely excellent schools. ऐसा आप कुछ चूज़ नहीं कर सकते। बट आप ये कर सकते हो इनसाइड थोड़ी रिसर्च करके कि कैसा कोर्स वर्क है हर एक यूनिवर्सिटी का। जैसे एनवाईयू हैज़ ब्रिलियंट माइंड्स लाइक ब्रिलियंट people here, the professors in computer science, like specifically machine learning. So yeah, so I personally thought about that and all of the factors. New York City also. तो आप कौन से इन्वायरमेंट में अडाप्ट हो सकते हो, कौन से शहर में आप रह पाओगे, कंसिडरिंग वेदर और सब चीज़ें, फूड ऑल्सो, ये सब चीज़ें, फिर आपका कोर्स में क्या स्कोप है उस यूनिवर्सिटी में, ये सब प्लेसमेंट्स कैसी होती हैं उस कोर्स की, ये सब आप कंसिडर करके यू कैन डेफिनेटली चूज द यूनिवर्सिटी। Demands of computer language in USA. There is everywhere, like a high demand of computer science everywhere in the world, not just US. Is there any educational criteria? Yeah, there is. You should have a 4-year degree before applying for the master's program. To any engineering program, अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो 4 साल का आपके पास अंडर ग्रेजुएशन डिग्री होना मैंडेटरी है, कंपल्सरी। Which books you prefer for GRE? Okay, so the most important book I feel is ETS. Then there is Word Power Made Easy. It's the best thing for your verbal preparation. ETS has both your verbal plus math. Then there are certain test series of Manhattan, Princeton, and Kaplan. They're also pretty helpful for your preparation. My question is: I'm in final year from Pune University. I'm not prepared for GRE but want to apply for it. Can I have a drop and go for higher studies abroad? Yeah, you surely can apply, but GRE के लिए आप 15 दिन में भी डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हो इफ यू हैव प्रॉपर अपना लाइक टाइम चार्ट मेंटेन कि ओके यू हैव टू फिनिश ईटीएस की बुक इस टाइम पे, सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द जीआरई। मतलब बिना प्रिपरेशन के इट्स हार्ड टू गो अबाउट द वर्बल स्पेशली। कॉन्ट आप स्टिल कर लोगे इफ यू हैव लाइक सफिशिएंट नॉलेज इन मैथ, 12th तक की भी अगर नॉलेज है तो।
we need to create an ETS account first, right? How much it's yeah, you'll have to create an ETS account for getting access to the test series, but not for the book. The book is free. Which books or publishers are important for GRE? Yeah, so I do not remember the name of the publishers, but okay. So ETS is a really good book. It's the best book for your GRE preparation क्योंकि ETS ही conduct करता है GRE. Then Kaplan is really nice, Princeton is nice, and Manhattan. आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है. Just go with ETS and either of Manhattan, Princeton, and Kaplan. तीनों एक ही level पे हैं. ETS is slightly upper on the higher level, or ye tino are slightly on the lower level. So choose one from the lower level and then go for ETS. ETS is a mandatory thing. It is actually very important. I'm so sorry, I have no idea about IFS. But surely there is an UPSC exam for that too, and it depends on your cutoffs and all that. Is Java market about to end or not? There's no end to any programming language, I suppose. कभी भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो किसी भी लैंग्वेज में, it depends on the product basically. हर एक कंपनी लॉन्च कर रही होती है different products in different languages, and Java is a really powerful language. So I don't see any end. Maybe there is. It depends on the company. Like it varies from company to company. Yeah. So that's all for now. Do you have any other question? Like anybody of you? From which university? I am doing my master's from New York University's NYU. I did my undergrad from IGDTUW, Indira Gandhi Delhi Technical University for Women. Java versus Kotlin, which is better? I'm not the right person to answer this because I have no experience in Kotlin actually. It again depends on the product you're building. GATE and GRE. GATE is for your MBA. Okay, no. So GATE is basically आपका MBA in India. अगर आप यूएस में एमबीए के लिए अप्लाई करोगे तो देयर इज योर जीमैट एंड जीआरई इज फॉर योर एमएस इन यूएस and many other countries as well. Which things are different for recruitment? There are no such things different for recruitment, but इधर they consider your GPA also कि आपका कैसा GPA है यूनिवर्सिटी में, एंड प्राइमरीली योर स्किल्स कि आपकी कंप्यूटर साइंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी स्किल्स कैसी हैं. रियल टाइम सिस्टम्स पे वो टेस्ट करेंगे, आपका प्रोग्रामिंग टेस्ट लेंगे, साथ साथ 2-3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. सो या इट्स ऑलमोस्ट द सेम ओनली. In English masters also, again the application process is totally the same. Work experience बस आपको आपकी फील्ड में होना चाहिए. That's it. Why study abroad? Yeah, that's a good question. Why study abroad? Because it shows you a different horizon of life. it it's a lot of learning actually, like different exposure to a completely different world, so many people with different backgrounds. There's a lot of learning. आप देखते हो कि ओके इतनी सारी चीजें थी जो मैं मिस आउट कर रहे थे हम प्रैक्टिकल नॉलेज पे, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना है, ये सब चीजें आप देखते हो कि ओके अब्रॉड में इतने सारे देशों से लोग आ रहे हैं, so how to go about solving problems. That's a pretty huge like learning experience. Please tell us more about SOP creation. Okay, so as I told, SOP is really important. SOP में is all about you, मतलब एक personal statement है. उसके बाद आप एक छोटा सा अपना introduction दोगे सबसे पहले. कुछ ऐसे personal introduction नहीं, academic introduction. Tell them about where did you do your undergrad from, and okay, which is your field of study and all that. नेक्स्ट थिंग इज व्हाई यू चोज योर फील्ड ऑफ स्टडी कि आपने यही फील्ड क्यों चूज किया जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो. फिर यू हैव टू राइट कि ऐसा पास्ट में आपने क्या आपके पास एक्सपीरियंस है कि आप केपेबल हो टू अप्लाई फॉर दिस मास्टर्स एप्लीकेशन. दैट इज प्रीटी इंपॉर्टेंट. एंड देन योर गोल्स, डेफिनेटली योर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी को क्या दोगे इन रिटर्न ऑफ द नॉलेज दे गिव यू, द academics they give you. That's important to be written in an SOP. That's all about SOP. Um, Living cost in US depends. It varies from state to state. I am living in New York City, and the rent here for a shared room is minimum $500 per month. That's just the rent. It again varies from state to state.
How's your lockdown going? Don't you miss your family? Yeah, definitely. I get homesick most of the times. And lockdown is fine. The city has been locked down. Like every city has been locked down here because it's pretty harsh. The situation is pretty harsh in New York City, especially. I'm doing good. Hope everybody is safe now. Suggest app for learn programming language. There's no such app actually. You can definitely anytime access the official documentation of that language, एंड यू कैन लाइक थिंक ऑफ कुछ भी एप्लीकेशन जिस जो आपको बनानी है, जो भी प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद यू गो अबाउट लर्निंग द लैंग्वेज. दिस इज व्हाट आई हैव डन. Can you share struggles happen with you in abroad? Okay, so struggles basically initially when I came here, the main struggle or challenge I faced was getting an accommodation. परमानेंट अकोमोडेशन ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको बेसिकली कुछ उन्हें प्रूफ देना पड़ता है कि यू आर अ रेलिवेंट और यू आर बेसिकली सेफ पर्सन उनके घर में रहने के लिए, उनके अपार्टमेंट में को रेंट करने के लिए. तो उसके लिए आपको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, जो बेसिकली एक मिडवे एक इंसान होगा जो आपको कनेक्ट करेगा लैंडलॉर्ड से. सो दैट वाज़ अ चैलेंजिंग थिंग फॉर मी. उसके बाद एक्सप्लोरिंग द पीपल लाइक लोग काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत होती है लोगों को. कुछ लोग काफ़ी कंट्री से वर्क एक्स के बाद आते हैं. I directly came without WorkX. I directly came after my like undergraduation. So that was very challenging during all the courseworks, yeah. Switching from electronics and background to computer and AI, which things will be required? जिस भी हमेशा मेक श्योर कि जिस भी फील्ड में आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसमें आपका रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए. अगर आप कंप्यूटर्स इन एआई में अप्लाई कर रहे हो, एआई में, तो आपका डेफ आप किसी भी फील्ड में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से स्पेशली आपका बैकग्राउंड जब इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो मेक श्योर कि आपने काम किया है एआई में. तभी वो कंसिडर करेंगे आपकी एप्लीकेशन. अदरवाइज दे विल सिंपली टेल यू कि यू आर नॉट अ फिट फॉर दिस, गो फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स. या सो दैट्स द थिंग. What is the minimum expenses in NYU? Okay, so tuition fee per year for NYU is 50K. Yeah, that's the minimum expense. It's just the tuition fee. Placement procedure, how much different from India? There are no university placements here. जो मैं जैसे मैंने पहले बताया, it's simply off campus. It depends on you how you take, like how you search for the placements. Masters of English, can we take arts in 11th class? Yeah, you surely can. It does not matter. You surely can take arts in class 11. Um, Is abroad better? Yeah, definitely it is. It depends on your field again. Depends on कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है. अगर आपको एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज में जाना है, रिसर्च में जाना है, तो डेफिनेटली यूएस इज अ रियली गुड ऑप्शन. मेनी अदर कंट्रीज आर ऑल्सो. Then, how does assistantship works and is it viable? Okay, so one important thing that I wanted to include here is there are on-campus positions here for students. जो graduate students होते हैं, उनके लिए campus पे jobs होती हैं. So one type of job is assistantship. Then there is TA-ship. Then there is GA-ship, graduate assistantship. So basically, इसमें you get हर घंटे के लिए wages, hourly wages. Then you work. ये department to department vary करता है. And जिस भी department में आपको काम मिलेगा, it purely depends on that, like what kind of work you'll actually have to perform. Which primary measures taken from first to second year for preparation for GRE and preparation for studies in abroad? So yeah, as I told, I started off with my GRE preparation in my third year of undergraduation. So in my first and second year, I primarily focused on building my profile, like working for internships and all that in my field, computer science. Which one is good for learning computer languages? Books or online websites? It depends on what kind of a learner you are. अगर आपको books से पढ़ना अच्छा लगता है, there are many good books for every programming language. ऑनलाइन वेबसाइट्स बहुत अच्छा एक्सपोजर देते हैं. अगर आप ऐसे इंसान हो कि आपको थोड़ा-थोड़ा पढ़ना पसंद है या स्कैटर्डली पढ़ना पसंद है कि एक कुछ इस जगह से पढ़ लिया इस वेबसाइट से, कुछ इस जगह से, then surely online websites are also a really good platform for you to learn.
I want to explore in ML and AI, but I'm from EC background. Please suggest me on how can I learn. Okay, so from scratch, I'll again suggest Andrew Ng's Introduction to Machine Learning course. It's on Coursera. It's one of the most decent and the best thing like in the world to start off for machine learning. You can always start from that. फिर जैसे जैसे आप उसमें इम्प्लीमेंट करोगे असाइनमेंट्स और सब, वैसे वैसे आप ऑनलाइन बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस है, फॉर एग्जांपल साइकिट लर्न की है, तो आप इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे कि ओके इस पार्ट ऑफ कोड से मैं ऐसे-ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ फंक्शनैलिटी। सो गो अबाउट इट लाइक दैट। आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, सो व्हिच इज़ बेटर फॉर मी, जीआरई और गेट? See, GATE is for like MBA in India. अगर आपको MBA जाना है तो टोटली डिफरेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ योर मैकेनिकल बैकग्राउंड। अगर आपको MS के लिए जाना है तो GRE देना पड़ेगा आपको इन योर फील्ड, लाइक मैकेनिकल, मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। Yeah, 50K in dollars, definitely. I'm talking every expense in dollar. Yeah. All right. So I think, yeah, that's for all for now. And please subscribe at the end of this video. And also, there's a feedback form towards the end. It'll be really helpful if you people fill that out. And all the best for your preparation. Okay, what to do for ML? There's another question. All right, so start off with Andrew Ng's machine learning course on Coursera. It's a really decent course. उसके बाद बहुत सारे आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाएंगे अलग अलग टेक्नोलॉजीज के, वहां से करना लर्न करना सीखो। फिर कोई आइडिया सोचो प्रोजेक्ट का कि अच्छा आपको ये फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, मीडियम पे ब्लॉग्स पढ़ सकते हो। ऐसे-ऐसे आप एक्सप्लोर करोगे, यू विल गेट टू नो कि हाउ टू गो अबाउट मशीन लर्निंग। Yeah, that's all, I think. All right. Thank you so much. All the best for your preparation. Stay safe, everybody.